Hello students, how are you all? So welcome to my channel Krishna Singhdeo. जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था that revaluation account से related video में रिलीज करूंगी, तो yes, today we are here to learn how to prepare revaluation account and what are the journal entries related to it. So सबसे पहले मैं आपको बताऊं revaluation account किस किस चैप्टर में आपको हैंडी रहने वाला है. अगर आप CBSE स्टूडेंट हैं तो आपके पास चेंज इन PSR रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, ये चैप्टर है. फिर एडमिशन का चैप्टर है, एडमिशन ऑनवर्ड ISC एंड CBSE दोनों स्टूडेंट्स को है. एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर. तो CBSE के लिए कुल मिला के 4 चैप्टर्स में एंड ISC स्टूडेंट्स के लिए 3 चैप्टर्स में इस अकाउंट की इंपॉर्टेंस रहने वाली है. ये अकाउंट बनाना ही होता है. जो बड़ा क्वेश्चन आता है आपका, वहां पर क्वेश्चन ऐसे आता है, दे आस्क यू टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट. तो इस अकाउंट की बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज यहाँ का बैलेंस आगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होके जाता है. तो विदाउट गेटिंग डिले, let us see how to prepare revaluation account. ये बहुत ही सिंपल अकाउंट है. सबसे पहले समझिए कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ये कैसा अकाउंट है. रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर क्या है. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. जो आपने क्लास 11th में डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पढ़े थे, तब आपने एज पर द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट देखा था. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल. तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, क्या रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का, दैट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर गोइंग टू बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर गोइंग टू बी क्रेडिटेड. बस वही रूल हम यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट पे लगाते हैं. समझिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता क्यों है. सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है. तो जब भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है उस समय हम एसेट्स को और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर लेते हैं. रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कब होगा, जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, या फिर among the partners continuing partner only change in profit sharing ratio हो रहा है. तब हम क्या करते हैं, revaluation of the assets and reassessment of liabilities करते हैं. revaluation of assets and revaluation of liabilities के अंदर क्या होता है, देखिए हम जो हमारी बुक में वैल्यूज लिखी हुई है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखी हुई वैल्यूज होती है. फॉर एग्जांपल जब हमने परचेज करी थी तब हमारी एसेट की वैल्यू 1 करोड़ रुपीस थी, लेकिन अभी मार्केट में उसकी वैल्यू 50 लाख रुपीस रह गई है या फिर 1.5 लाख हो गई है. तो बेस्ड ऑन दैट हमको अपनी एसेट्स की वैल्यू को एडजस्ट करना होता है और वो एडजस्टमेंट करने के लिए इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया जाता है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा नेचर का अकाउंट है, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट. तो जितना भी फायदा होने वाला है, मतलब फायदा कब होगा, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सो इट इज गोइंग टू बी अ गेन फॉर अस. सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू बाय एसेट्स अकाउंट इंडिविजुअली इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट लिखा हुआ है. ठीक है, इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ ग्रीन कलर से, तो आपको यहाँ से पता चल जाए. और ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. ठीक है, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. लाइबिलिटीज, अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो फर्म के लिए क्या है, इट्स अ नुकसान. ओके, इट्स अ लॉस फॉर फर्म. क्या है, अब और लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी. तो वो लाइबिलिटी की वैल्यू को हम लोग कहाँ लिख लेते हैं, डेबिट साइड में, सिंस इज अ नॉमिनल अकाउंट. देन एसेट, किसी एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाए तो उस वैल्यू को भी हम लोग कहाँ लिख लेंगे, डेबिट साइड में. देखो तो क्या हो गया, एनी इंक्रीज इन द एसेट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड, एनी डिक्रीज इन द लाइबिलिटी इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड. बिकॉज डिक्रीज इन द एसेट क्या हो गया, ये फर्म के लिए एक तरीके का फायदा है, और any increase in the liability is नुकसान for firm and it is going to be debited. Any decrease in the value of asset because of depreciation and all will be debited in the revaluation account. Then उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ liabilities थी जिसे हमें बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए थे. तो ऐसी लाइबिलिटीज को बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज. सिमिलरली ऐसी एसेट्स जिनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए थे, दे आर कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स. तो जब आप किसी अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो उसका सेम ट्रीटमेंट होगा जो कि इंक्रीज इन द एसेट होता है, मतलब वो क्रेडिट साइड में जाएगा. देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ अनरिकॉर्डेड एसेट. ऐसे ही अगर हम किसी एसेट को किसी लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना भूल गए थे और अब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका वही सेम ट्रीटमेंट होगा जो कि इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, मतलब कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में लिख देते हैं. उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने, और क्या आएगा इस अकाउंट में, एक तो हमने एसेट्स के इंक्रीज और डिक्रीज को रिकॉर्ड कर दिया. एनी इंक्रीज इन द एसेट इज क्रेडिटेड, एनी डिक्रीज इन द एसेट इज डेबिटेड.
any increase in the liability is debited and any decrease in the liability is credited. इतना करने के बाद हमको और क्या चीजें लिखनी होती है? ये जो रिवैल्यूएशन का काम होता है ये एक्सपर्ट्स करते हैं, हम और आप इस काम को नहीं कर सकते। एक्सपर्ट्स बताएंगे कि वैल्यू कितनी है एसेट्स की मार्केट में और बुक वैल्यू क्या है वो हमें बुक से दिख जाएगी। तो हो सकता है इस सब काम को करने में कुछ खर्चा है, तो वो होता है रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। अगर वन ऑफ द पार्टनर्स ओनली टेक चार्ज दैट द पार्टनर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, देन हम उस पार्टनर को कुछ रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट फर्म ने किया है जहां पर पार्टनर को हम लोग रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो उसे हम लिखते हैं डेबिट साइड में बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। ओके, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्या लिखा, रेम्यूनरेशन को डेबिट कर लिया। फिर अगर पार्टनर नहीं कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, फर्म खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि जितने भी रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस होंगे दैट विल बी बोर्न बाय फर्म। सो एनी कैश एंड बैंक, through cash or through bank, this payment will be done, or that will be firm's cash account or bank account. So we will record like this to cash or bank account. Revaluation expenses will be recorded on the debit side. Then we'll reach the last stage of preparation of this account, that is totaling of the account and balancing of the account. So as we know, we have discussed that this is a real account and all the incomes and gains are going to be credited. So if credit balance is more than the debit balance, it means it's a gain. And where should this gain go? This gain should be transferred to partner's capital or current account as the nature of the capital account is followed by the firm. If they are following the fixed capital account method, then it will go to the current account. If they are following fluctuating, then it will go to the current account. So gain in their old profit sharing ratio will be distributed among the partners. Yes, remember that it will be old profit sharing ratio, and if it is admission, this share of gain will not be given to incoming partner, and if it is retirement or death, then it will be given to all the partners. And in change in PSR, remember that old profit sharing ratio has to be taken into account. And then, and if reverse happens means if there are more of expenses and less of income, means the value of asset has decreased more and the new liabilities have come, but the increase in the assets is lesser or not there at all, then there can be loss also, means your debit balance is greater than your credit balance. In that case, there is loss, and loss on revaluation is also transferred to partners capital or current account as the case may be in their old profit sharing ratio. Remember that in case of admission, incoming partner will neither gain or not share the loss also because of the revaluation of assets and liabilities, whereas in the case of retirement and death of the partner, the continuing partners will also get, and as well as outgoing partner. Who is outgoing partner? Retiring partner or the deceased partner is also going to share the gain or loss out of the revaluation account. So I hope this is clear to you all. Now here over here there is some shortcut written over there. What is this? This is golden rule. What is golden rule? Remember that revaluation account is a nominal account. So whatever losses and expenses are there, I have written it in Hindi. Nuksan, whatever nuksan is there, it is going to go on the debit side, and whatever faida is there, means any income and gain, it is going to go on the credit side. And revaluation account in just I have made with the help of arrows also. So any decrease in the asset is going to come on the debit side, any increase in the liability is going to come on the debit side, and the result of credit side is, if it is higher, means total of credit side is higher than debit, then it is going to be gain, and that gain comes on the debit side. Whereas any increase in the asset is going to come on the credit side, and any decrease in the liability is going to come on the credit side. And if there is excess of debit over credit, loss will come on the credit side and will be distributed among the partners from here. Now let us move to the next part. What is next part? Next part is increase, general entries related to increase, decrease, or so on, whatever we have written in the revaluation account. How do we record this? Number one, journal entry for increase in the value of asset. If any asset increases, remember that what is the nature of asset account? Usually the asset account, most of the assets account except for bank etc, sometimes they can have credit balances. Otherwise most of the assets, or we can say 99% of the assets, have debit balances. Okay, so debit balance means asset is increasing, increase in the asset. If you follow the modern approach, it says the rule for the asset account, any increase is debited and any decrease is credited. So what is happening? Asset is increasing, so it will be debited, and revaluation account will be credited. On the contrary, if asset is decreasing, so any decrease in the asset is credited. So asset will be credited, and on the opposite side, means on the debit side, revaluation account is going to come.
The opposite for the liability. What is the rule of liability? As per the modern approach, now you go. As per the modern approach, liabilities, any increase in the liability is credited and any decrease in the liability is debited. So if liability is decreasing, liability account will be debited and revaluation account will be credited. If liability is increasing, then opposite will happen, means liability will be credited and revaluation account will be debited. Unrecorded asset will have the same treatment as increase in the asset, means asset will be debited and revaluation account will be credited, and unrecorded liability will have same treatment as increase in the asset, increase in the liability, that is liability account credit and revaluation account debit. I hope till here things are clear to you. Now we are left with few more entries. Number one, that is when remuneration is paid to a partner. So the concerned partner will be paid remuneration and it is an expense for the firm. So revaluation account will be debited and partner's capital account, whichever partner is doing this work, that concerned partner's capital account will be credited. If firm itself is paying remuneration by its cash account or bank account, then the journal entry is going to be revaluation account debit to cash or bank account. And at the end, we will either have loss or we will have gain. If your credit balance is greater than debit balance, it means you have a profit. And if debit is higher than credit, it means you have a loss. So if we're transferring gain or profit on the revaluation, the entry will be revaluation account debit to partner's capital account. Which ratio has to be followed? Old profit sharing ratio has to be followed, and each partner individually will be given the gain. And if there is a loss, means your debit balance is higher than your credit balance, then reverse entry will be passed. What is reverse entry? Partner's capital or current account will be debited in the old profit sharing ratio, and revaluation account is going to be credited. Okay, so that's all about revaluation account. I hope this is clear to you all. This is very, very simple, students. Revaluation account is very important, yet very simple to understand. Let us revise once again what is the format of revaluation account and what comes on the debit and credit side. So revaluation account is a nominal account under which all the expenses and losses are going to be debited and all the incomes and gains are going to be credited. So on the debit side, any increase in the any increase in the liability will come, any decrease in the asset, any unrecorded liability is going to come on the debit side. If any remuneration is paid to the partner, that will come. If any revaluation expenses are paid by the firm, that will come on the debit side, and gain on the revaluation comes on the debit side. It's a balancing figure. On the other hand, means on the credit side, what comes? On the credit side, any increase in the value of asset comes, any decrease in the liability or unrecorded asset is going to come over there. And at the end, whatever is the balancing figure, if your debit is greater than credit, that is balancing figure, it will come on the credit side, and this balancing figure will be lost and it will be distributed among the partners in their old profit sharing ratio. So I hope after revising from here, this concept will become clear to you. Now what you have to do, the next step is you will replay this video later on after reading from the notes which I am going to share with you on my Telegram channel. Or if you do not want to see these notes, whatever notes you have prepared with the help of your teacher or you have prepared on your own, or simply you can go through from your book also. And after that, you are going to see this video once again and then start solving the questions based on only revaluation account. I hope this will definitely help you to understand how to prepare evaluation account and your doubts will be clarified. If further doubts are there, please do contact, drop a comment in the comment box. I will definitely help you. Okay. So do not forget to share, subscribe and like. We will meet in the next class. Till then, have a great day.